Good morning, everyone. I warmly welcome you all to this seminar. Uh, Respected sir, uh, now now I would like to call Pratiksha to present the flower to respected Alekha Sachidananda Nayak sir. Now I would like to call Sir Alekha Sachidananda Nayak to present and shower us with his knowledge. Good morning to all. Thank you so much for piece of love and gratitude as a flower pot, as a plant. Definitely, it's ironically we try to understand the important significance of plant and it's important for earth. Definitely, we have to work upon it. But today our topic is new media communication practice in 21st century, which is in our pocket. दुनिया की इस तरह की चीज़ें जो हमारे पॉकेट के अंदर ही है और दिस इज़ द प्रेजेंट ट्रेंड एंड इट इज़ जैसे कि हम विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव विदाउट इंफॉर्मेशन वी कैन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ subject that is communication. We all know communication means exchange of information between two individual, organization or persons or anything, and without from the birth to death. So we have to do communication and it should be more effective and it should be more comprehensive so that we could achieve whatever goal we have. And we could say it's the center of all other disciplines. Okay, it may be science, it may be geology, botany, or engineering, or medical science. You have to do communication. Your final outcomes should be published. So we are in a new age. New means something which is new, something different from the traditional. Okay, it's a relative terms. Okay, मैं पहले पूछ रहा था आप लोगों की कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, शायद सभी के पास होगा, right? So we have a tool, we have a mechanism which is in our pocket, and we could call it a most influential and most interesting thing which rule or control the whole world, right? So let's move. It empower individuals. So why it is new? So let's go through the history of communications. Let's have a glimpse of it. Previously we don't have anything. Just like other animal, we are try to interact. We try to put effort so that we could understand each other. We could collect the information, process the information, and transmit that information. The basic process of communication is collecting, gathering information from any sources. Okay, let's understand that information and that information to transmit to next generation. अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने दोस्तों से कोई कुछ बताना चाहोगे, ठीक है, आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास विजुअल नहीं है, और उनको बताना है, तो how difficult it is. We are living in a highly sophisticated, complex society where so many information, so many advantages, innovation we have that we need to share. And for that, we have to work on communication practice, its tools, its applications, and rapidly you could say every 15 minutes, some new applications are coming, new ecosystem are evolving, and definitely we have to understand it. And previously we are talking about communication, new media communication, basically it means that something which is better than the previous, and it's a relative terms. आपने साइंस में पढ़े होंगे relativity. It means आपको जो दिखता है दूसरों को ही नहीं दिख सकता, वो कुछ अलग तरीके से दिख सकता है. जिस ट्रेन में आप जाते हो, दो ट्रेन अगर एक साथ चलते हैं तो लगेगा both the train are static. So it's a relative term. Similarly, communication is a relative terms. Newness is a relative terms. How much advancement you have after few days or few months, after few decades, the things will be changed. Okay. Before 200 years, when we developed printing technology, that was the most sophisticated, most
advanced mode of communication so that we could duplicate our content quickly to the mass. दुनिया में जो बहुत बड़े परिवर्तन आया है, जो आप जिस युग में हम जी रहे हैं, इस जो परिवर्तन की शुरुआत प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण हुआ था, ठीक है, ताकि हम जो भी उस समय की बेस्ट इनोवेशन है, बेस्ट थॉट प्रोसेस है, जैसे कि आप डेमोक्रेसी कह सकते हो, साइंटिफिक इनोवेशन कह सकते हो, या स्पिरिचुअलिटी की हायर अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, this information get disseminated to the mass. Everyone could understand the things, so that several revolutions, several agitations, several new revolution in every perspective you will find in science, literature, in religions, every aspect will find some changes, and this is possible because of new media of that time, that is printing technology. But today new media is a digital medium. Why it is digital medium? Because this is the best way to decode our informations. Information could be visual, it could be text, it could be audio, it could be your day-to-day activity. Everything could be converted in the form of digital content. Digital means 0 and 1. सिर्फ दो अक्षर से हम दुनिया को प्रोसेस कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं। कैन कुड इमेजिन, सिर्फ आपके पास दो ही लैंग्वेज है, दो ही डिकोडिंग प्रोसेस मैकेनिज्म है, 0 and 1। इसी से हम पूरा दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। Initially it was difficult because we don't have such kind of technology to store number of information in the form of digital form. जैसे कि एक पिक्चर्स को हम डिजिटल कन्वर्ट करेंगे 0-1 में, तो लंबा डिकोडेड मैसेज बनेगा, and that message we send across the world with help of different kind of platforms. For example, Wi-Fi or broadband, all the network work together so that we could understand, we could enjoy the internet connectivity. So today, the world of digital media. What are the advantages of digital media? It's interactive in nature. Previously, whatever communication tools you have, that is one-way communications, means somebody should create the content and other ones should receive that information. Okay, there is no exchange of information. Interaction is limited. Today, आप इमेजिन कीजिए जब कोई भी इंफॉर्मेशन हो जिसको हमें स्टोर करनी है, एक पत्थर में खुदाई करके लिखना हो, और उसको बनाने के लिए कितने समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद पेपर आया तो इमीडिएटली हम उसको पेन में लिख सकते हैं। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान हो गया, पत्थर को प्लेट को लेके कहीं जाना है, किसी को लेटर लिखना है, पत्थर में खुदाई करके हम किसी को भेजते हैं, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज। नो डाउट इट्स मोर ड्यूरेबल इन नेचर। आज भी पत्थर में जो लिखा गया वो हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बियॉन्ड द जनरेशन, बियॉन्ड द टाइम गैप, वी कुड understand what is their circumstances, what is their achievement, what is their understanding about the society because of that kind of communication. That's also communication, ठीक है। क्लास के अंदर आपके ambience, everything try to communicate you that what they want to express. So new media जब हम evolve होते रहते हैं, उसके applications बढ़ते जा रहे हैं, speed, quickness बढ़ते जाते हैं, duplication हम quickly कर सकते हैं। पहले हाथ में आप अगर लिखोगे तो it will take a long time to disseminate a particular information to the mass. When we have printing technology, within few hours we could produce thousands of copies of the same content, and that could be distributed to the mass. Okay, we are connecting with each other. Could you imagine how our body is working? Billions of cells, millions of billions of cells are interacting with each other. Our nervous system, our circulatory system or digestive system work together, then only could exist ourselves. हम एक इंसान है, हम अपने आप को जिंदा इसलिए मानते हैं कि बहुत सारे सेल्स एक साथ काम करते हैं ताकि हमें एक यूनिटी के जैसे लगता है। आपको नहीं लगता है कि मैं 1000 सेल की लाखों सेल से बना हुआ कोई इंसान है, आपको एक लगता है। So world is get connected with each other, like all the cells are interacting with each other for information, for nutrition. Then only you survive. Similarly, complete universes are interacting because of digital communications, and we could survive and grow as a unit, as individuals, and this kind of possibility we could look after it. So, हम पूरा विश्व की हर इंडिविजुअल हम अलग अलग नहीं है, हम एक की ओर जा रहे हैं।
मणिपुर में कोई समस्या हुआ, उड़ीसा में कोई समस्या हुआ, तो हर कोई फील कर रहे हैं इस चीज़ों को। यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हम भी इसको फील कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड, वी directly or indirectly we get influenced by that. So these are some of the key pillars of new media to understand it. So all kind of content, we are collecting that information, processing that information and disseminate information in a digital form. एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ऐसी जरूरी प्रॉब्लम नहीं कि कोई ओडिया की लिटरेचर अगर अच्छा बोलता है या लिखता है उसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। डिजिटल हार्ट है कैपेसिटी दैट वी कुड इजीली ट्रांसलेट। अगर हमारे पास बहुत अच्छा पेंटिंग है उसको हम पैक करके पोस्टल में यूरोप में किसी कंट्री में भेजने की जरूरत नहीं, सिंपली वी जस्ट पिक दैट पिक्चर्स एंड वी कुड सेंड क्विकली। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द न्यू मीडिया ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। एंड हु नोज, मैं आपको पूछूंगा एंड ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट विल द कंडीशन, व्हाट विल द न्यू मीडिया आफ्टर 50 ईयर। एक जमाने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज द एडवांस्ड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। एक जमाने में जो अच्छा बोल पाता था, आज भी दे आर द लीडर, दे आर द रूलर, दे आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो बोल सकते थे, जो चीज़ों को डिकोड कर पाते थे, दे आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी। तो oral communication once upon a time was a advanced form of communication. That was the new medium of that time. जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ लोगों के पास जो पब्लिकेशन शुरू किए, लोगों के समस्या को आइडेंटिफाई किया, उसमें उसको प्रोसेस करके लोगों के सामने रखा, दे बिकम जर्नलिस्ट और वो दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बने। आपकी फ्रीडम मूवमेंट जो सारे दुनिया भर के देश में हुआ है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑल बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसी फ्रीडम फाइटर नहीं जो प्रिंटिंग के साथ जुड़ा ना हो। एंड नाउ we are in the age of digital age and you are connected with the most advanced form of communication and you are the most powerful beings in this world. No doubt previously limited people access that advanced mode of communication, but you are the generation, you are the people who are connected to the new media and you have the power to change, give direction to the society, direction to the complete earth. दुनिया के फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे जाके किस दिशा में हम जाने वाले, क्विकली चीज़ें सब चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हम क्ले कार्विंग से पेपर में आने के लिए हमारे लिए 100 साल लग गया। प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप होता है अराउंड 50 साल लग गया उसको प्रेजेंट सिनेरियो में जो जर्नलिज्म के फॉर्म में लाने में। जर्नलिज्म में डिजिटल रेडियो और टेलीविजन आने में कम से कम 30 साल लग गया। टेलीविजन से न्यू मीडिया आने में सिर्फ 10 साल लगा है। और अभी जो एंड्रॉयड बेस्ड कंप्लीटली इंटरैक्टिव एंड एआई इज कमिंग, एआई आने के बाद विद इन आई थिंक जब गूगल ने लॉन्च किया एआई या चैट जीपीटी, शायद 1-2 महीने में सारे लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो new media is more engaging, more connecting and more involving with the people. So there are several advantages of digital platform. It's a revolution no doubt, which is interactive nature and participation nature. Previously it was one-way communication. Now whatever post you upload, people either accept it and reject it. You could know what is your level, what is the standard, what kind of contribution you could do within a second, within few minutes you could understand what is your contribution. और आप अगर दूसरों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिजेक्टेड इजीली हो जाओगे। जैसे कि हमारे में आपको बोल रहा था कि हमारा पूरा ग्लोबल, पूरा कंप्लीट अर्थ एक ह्यूमन बीइंग के बड़ी के जैसे काम करता है। कुछ जब खाना अगर खाते हैं उसमें अगर कोई अननेसेसरी थिंग है वो इमीडिएटली निकल जाता है। सिमिलरली डिजिटल एज में, न्यू एज में अगर हम ऐसे कुछ पोस्ट करेंगे, ऐसे कुछ चीज़ें हम डालेंगे which is unnecessary, which is not important for others, they will reject it. So you have to identify what is the best out of best. Whatever content we are creating, whatever information we are look after, हमारे सामने बहुत कुछ चीज़ें हैं। हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा अमेजन प्राइम की सर्विसेज है, बहुत सारे पैशन चीज़ें हैं। उनमें से which is the best? AI एल्गोरिथम आपको बताता है
but you have the key persons who cultivate that algorithm, and you have the key persons to identify which is the best, and that could be done by your understanding, your power of interpretations. And if your power of interpretation connected with the AI of different AI company, that will be great. So these are the basic nature of digital platform or newest platform. They are interactive nature, more participation nature, and your involvement is essential. Okay, for personal growth and growth of this complete universe. And user-generated content. This is an old concept, but it's important. User-generated content means we all are user, we all are consumer of information, right? हम सारे लोग मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ठीक है? Simply you are not consuming the content. You have the power, you have the potential. हम नहीं बोलेंगे कि ये एडिटर अच्छे नहीं लिखते, ये पब्लिकेशन अच्छा नहीं आते, इस तरह कंटेंट अच्छा नहीं आते, तो इसलिए हम बर्बाद होते हैं, हमारे बच्चे बर्बाद होते हैं, हम मिसलीड होते हैं. ये एलिगेशन हम किसी को नहीं दे सकते, because you have the power, you have the capacity to create the content. So this is another beauty of new media, that any user could create content. आप अभी नहीं बोलोगे मेरे कैमरा चलाना नहीं आता है, ये मेरे पास कैमरा नहीं है. हमारे समय में जब मैं यहाँ पढ़ रहा था, हम कैमरे को देखने को नहीं मिलता, पर आज आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है टू क्रिएट कंटेंट, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. मैं आपको इस सारी चीज़ बताता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, अगर मैं नहीं बताऊँगा, मैं अगर नहीं बताता, you could also search these things. Definition of what is gratification, what is generating theory, what is normative theory, but all these are available in internet platforms, and they will explain it better than me. Though I have some understanding, I have some experience that I want to share with you. So user-generated content is important. So you could create blog, democratization of information means anybody could be the part of this global practice. Conversion and multi-directory. It means all kind of platforms, all kind of possibility get converged into one form of content, that is digital content. If you have the capacity to create content in audio platforms, you don't need to go for a FM channel or no need to go pay AI. You could use your mobile phone. If you're doing best paintings, you don't need to any ink or colors for that. Your mobile phone could do that thing. या टेलीविजन आप चैनल बनाना चाहते हो, चैनल की आप लिमिटेड रिसोर्स से भी बना सकते हो, and all are could be available in the same platforms. ठीक है, things are converging, they are interacting, things are get more complex in nature. Another thing is like our cell are interacting, nervous system से blood circulatory system से interact करते हैं. कहीं कहीं आपका किस जगह में कोई खुजली हुआ, कुछ हुआ, तो इमीडिएटली सारे इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं. सिमिलरली दुनिया में किस जगह में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सारे एक्टिव हो जाते हैं, एंड यू हैव टू पार्ट ऑफ दैट एक्टिव प्रोसेस. सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? ये बेसलेस क्वेश्चंस. ठीक है, आप गूगल में एक बार सर्च करो, टॉप कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एक बार करो, देखते हैं कौन पहले एक्टिवली बताता है. लेट्स स्टार्ट. हाथ रेज करो. हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. आप देखोगे ये सारी कंपनियां क्या करते हैं. दे आर द डिजिटल बेस्ड कंपनीज. They are giving the platform for you. They may have some social media platform. They may have the platform for selling their product. They have the platform to your engagement to create your content. So definitely it's important is there. अगर आप किसी भी फील्ड में हो, ऐसे कोई फील्ड नहीं है जिसको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, डिजिटल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है. पीपीटी सभी को बनाना होता है, अपनी बातों को लोगों के पास रखना होता है, अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को सभी के पास पहुंचाने के लिए. ओनली एन अल्टीमेट मीडियम दैट यू हैव टू डू.
Transformation of journalism and news consumption. Traditionally, we have one-way communication. Now we have citizen journalism. Means every citizen have the power to create content for other. Social media verifications, changing new consume and understanding news. So social media also source of informations. कभी कभी वर्ल्ड जोन में जो इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट लेके नहीं आ पाते तो आम इंसान की वीडियो ही चलता है, ठीक है। ट्विटर से आजकल हम न्यूज़ को हार्नेस करते हैं, ठीक है। जो इंटरेक्शन होता है, डिबेट डिस्कशंस होता है, उसी से हम आगे चीज़ों को लेके जाते हैं। बट देयर आर सो मेनी कंसर्न्स आते हैं। देयर आर सम बिग चैनल्स, बिग मीडिया, दे ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स, they try to manipulate the things, they have some capacity. You know what is agenda setting theory as a student journalism? Anyone? बहुत पुराना theory है, but it's important still today. Anyone? Agenda setting theory? It means हाँ, सर्च कर, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ याद रखने की भी जरूरत नहीं सच में, क्योंकि एनीथिंग इज अवेलेबल इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। आप ऐसे चीज़ों में आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हो जिसको जो समथिंग मिसेस न्यू है, समथिंग इज इनोवेटिव। यू कुड आप आज अभी के समय सारे आपके फिंगरप्रिंट में है। बताओ कोई एनीवन? नो, और क्विकली कोई और देख सकता है, सारे लोग सर्च कर एजेंडा सेटिंग। So it is the power of media to influence the public by showing certain aspects more or certain information in a To some extent. Next, कौन क्विकली चीज़ों को इन्फॉर्म को प्रोसेस कर सकता है? लेट्स सी, कोशिश 2 लोग किए, सभी लोगों का एंगेजमेंट चाहिए। हाँ, मोबाइल में सर्च कर क्विकली व्हाट इज एजेंडा सेटिंग, या आप सर्च करने की जरूरत नहीं है, वॉइस में उसको पूछ सकते हो। व्हाट इज एजेंडा, क्विक लेट्स सी, कितने समय है? जल्दी, इतने स्लो कैसे डिजिटल कम्युनिकेशन एज में सर्च करना इतना कोई? Media being ability to control what we should think on different aspects of society. Simply put, say it set the agenda. Okay, what is your priority? It's set by the television channel or big media organization. And what is agenda? Agenda means something which is important for you, important for the mass. That's set by particular channel or number of channels. So media influence culture, brand, and it's connected to marketing. And it's a voice for the marginalized people because of new media, because anyone could create content. But there are some challenge and concern with the new media like fake news. ठीक है, कुछ इलेक्शन से पहले आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी लोगों को ट्रेन करके लोगों के सामने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि आप फेक न्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैकेनिज्म और टूल्स वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इट्स ए कंसर्न, आपके सामने कुछ आता है और आप उसको क्विकली फॉरवर्ड कर देते हैं, और ये नेगेटिव मैसेज से इलेक्शन से एक दिन पहले आपको देखोगे इस तरह की मैसेज आएंगे कि आपके जो पार्लियामेंट्रियंस होंगे, चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में एक नेगेटिव कंसर्न आपको डेवलप हो जाएगा। वोट करने के बाद सोचने के लिए कुछ होगा नहीं। या कभी कभी ऐसे होता है कि भीड़ जो मोब होते हैं, आपको लगे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, आप जाके उनके घर तोड़ दे कुछ कर लोगे, तो ये उनका तो पॉलिटिकल एजेंडा सेटिस्फाई हो जाता है, या इंटरनेशनल एजेंडा सेटिस्फाई हो जाता है। आपने सुने होंगे टूल किट, इस तरह की चीज़ें कंप्लीटली देश में केओस क्रिएट करने के लिए कुछ टूल किट को सर्कुलेट की जाती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इस प्रोसेस में। तो दीज आर द चैलेंज। इको चैम्बर, जैसे हम एक बात बोलते हैं वो रिपीटेड होते जाते हैं। इको चैम्बर, जैसे हम कोई आपने इको के बारे में सुनी होगी, इसमें अगर मोटिवेशन चेंज करेंगे इसमें इको क्रिएट होगा, रिपीट होगा, तो एक बड़ी चीज़ आपको लगेगा, बट इट्स नॉट दैट बिग। एक कोई इनिशिएटिव लिया, इको होते रहते। क्रिटिकल थिंकिंग इज रिड्यूसिंग। हाँ, दोनों पहलू है। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ सकता है, या कम भी हो सकता है, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, या सोचने की अवसर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि एजेंडा सेटिंग की एजेंडा सेटिंग की आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि
go for it and understand it and try to interpret in the present scenario in your context. Privacy is an issue, data security is an issue, cyber bullying is there. These are some of the challenges concern of new media. Okay, so I want to ask another questions that what will the new media after 50 years, 50 साल बाद, सपोज डिजिटल मीडिया हमारे पास नहीं है, तो आप एक बार सोच के देखिए कुछ क्या मीडियम हो सकता है जो डिजिटल मीडियम कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है, और जो आगे की सोच पाता है वो उस मीडिया में डोमिनेट कर सकता है. सो क्विकली सोचिए 50 साल बाद क्या हो सकता है. इसके बाद कुछ एक टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज यू आर इन ए डिजिटल एज, इट इज अ विजुअल. पहले हम रिटन फॉर्म को विजुअल इमेजिन करते थे, ठीक है, पर आज सारी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, whether in the form of picture, in the form of infography. So we should have the capacity and we should have the understanding how to create our idea in the form of visuals. आपने एक कविता सोचे, इस कविता सिर्फ अक्षर में नहीं सोचोगे, इसको आप पिक्चराइज करने के लिए सोचोगे. एक फिल्म सोचे तो इसको सिर्फ अपनी कहानी लिख के कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसको आप विजुअली चीज़ों को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है. इसमें हम कहते हैं कि हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया की कंसेप्ट है कि लोग आजकल ज़्यादा सोचते नहीं है, इजीली कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं. लोगों के टाइम स्पैन कम है, तो इजीली यू ट्राई टू इंटरप्रेट द थिंग्स. इफ यू वांट टू कम्युनिकेट कन्वे योर आइडियाज, आप कैसे भी बना रहे हो या आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अपना प्रोफाइल को रखना चाहते हो, तो इन दैट सिनेरियो विजुअली यू शुड बी स्ट्रॉन्ग. इसके लिए आपको यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन लाइट, यू शुड अंडरस्टैंडिंग ऑन एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक्स, and you should have command of digital platforms concept like collaboration with help of Google Drive or cloud computing. Cloud computing means it's another revolution in the field of new media. It means one